Welcome back, friends. So we begin the week for the Nifty, the week beginning August 7, 2023. Now, during the last week, we saw the FIIs have turned net sellers due to the spike in US 10-year Treasury yields to above 4%. Now, that is on the back of the the credit downgrade by Fitch that happened during the week. All this has come together, and even the week prior, FIIs were net sellers, but this week they have sold over 3,546 crores of shares in the domestic Indian market. DIIs have compensated by buying over 5,600 crores this week. Yet you found that the Nifty has headed lower for the second consecutive week. And looking at this week ahead, first, the most important thing that comes to our mind is the RBI policy decision awaited on August 10. It's a very crucial decision because right now the inflation is under control, but not quite. You're seeing that there is food prices which are beginning to go northward once again. And to the best expectation that we can have from the RBI in this particular policy decision is that they may be extra cautious, and they are expected to hold the repo rate of 6.5%, as well as I think that they will continue with their policy stance. So no reduction, they would not do that. That would reduce the differential between the US interest rates and the Indian interest rates, and that would be counterproductive because there could be more FIs selling and there could also be a pressure on the Indian rupee. All this may not be happy as we are also nearing an election year. Lots of results expected in this week. This is the last leg of the earnings season, the June quarter earnings season, friends. So we have over 1,800 companies which will be coming out with their results this week, including Adani Ports, Coal India, Hindalco, Grasim, ONGC, Hero Motocorp, LIC. All these are going to come out. And they will also have an impact. We had a mixed impact from SBI, good results, but NIMs going down. So something curious happened last week. But we also have a lot of other data. This is August 10 is the day when we get the RBI policy decision. But on August 11, we have more data coming out. The industrial and manufacturing production numbers for June. We have the bank loan and deposit growth for the fortnight ended July 28. Foreign exchange reserves for the week ended August 4 will all be released August 11. So all these will also have to be taken into consideration, and they will have an impact. Another thing that you must keep in mind is that oil has now gone to over $86 a barrel. On Friday, Brent crude closed at 86.24, and that's rising 2.2% this week. This is all in the backdrop of Saudi Arabia extending its unilateral 1 million barrels a day oil output cut beginning September, and Russia also saying that they are going to do the same thing. So that's going to have an impact on oil prices, which have been on the boil once again. So therefore, inflation is coming back in a different manner. You may find that the US Federal Reserve decision coming out later on during the week, Feb 10, can also have an impact where inflation and the core inflation for July could remain around the June levels, yet there could be some change in the data, even a minor change, as the markets are at all-time highs, can have an impact. So do not forget that as well. During this week, last week, we saw the BSE closed down 439 points at 65,721. Nifty was down 129 points at 19,517. There was selling pressure in banking stocks, banking and finance stocks, auto, FMCG, oil and gas, whereas there was some buying seen in technology stocks this week. Now, in this forthcoming week, because of the RBI policy decision expected on August 10th, interest rate sensitive stocks like banking stocks could be foremost on the horizon.
and they will definitely having a big impact. Also, we'll have to keep another closer watch on the FII selling. Consistent FII selling with rising US bond yields does not augur well for the well-being of emerging markets such as India. Also, we have seen disappointing factory data emanating by China and also the Eurozone. So there are many things which can come to hold, and as I said, the RBI expected to hold its repo rate at 6.5% as well as its policy stance, but rising inflation, oil prices going higher and vegetable prices may all come and spook the markets as well. Now, RBI policy decision may not be which is negative for the markets per se, because they also do understand that this is an era where they need to be very cautious. And I don't think they're going to, Shaktikanta Das is going to take any steps to go out and spook the markets. But I'm trying to lay out the framework of what lies ahead, not only this week, but even further. I have just given you a framework of the idea of where we are entering this week and where we'll be going further from here. If you ask me to give you some projections of how I feel this week will span out, and my best analysis says that we can start with some amount of volatility this forthcoming week. It's a week where the August 10 data will be, and the day will be most crucial. It's also an important options expiration day. So on this day will be one of the crucial things that you'll be looking at, especially bank stocks on that day. A week beginning August 7, where there could be 2 days of volatility, one good rise. I can see 1 day of good rise, 1 day of good fall. So all this turns out and presents a rather mixed picture at this point of time. All these days I'm releasing in detail in my Premium and Premium Plus. Premium Plus get 8 to 10 days in advance. This time we may be even releasing 2 weeks in advance. So they get all this information. Please do feel free to join Premium or Premium Plus as per your requirements. Okay. And they are all of them are very moderately priced, and the number to get in touch is 9820861044. भाई और बहनों, इस हफ्ते में जो दिख रहा है मुझे मार्केट में कुछ मिला जुला सा रहेगा। शुरुआत में एक अच्छा दिन दिख रहा है, एक काफ़ी बुरा दिन लग रहा है, कुछ 2 दिन मिक्स्ड लग रहे हैं, और आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन आ रहा है अगस्त 10, तो ये आपको सोच के आगे ट्रेडिंग करना होगा संभाल के, क्योंकि आरबीआई का जहां तक मेरा समझ है वो अपना पॉलिसी स्टांस को भी वही रखेंगे, और जो ब्याज दर है, रिपो रेट है, 6.5% तक ही रखेंगे सीमित। इन्फ्लेशन की थोड़ी सी फिर से वेजिटेबल प्राइसेस, भाजियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आप कोर इन्फ्लेशन को देखें तो फिर वहाँ पे भी कुछ अपवर्ड स्विंग दिखाई दे रही है। तो बहुत संभाल के आरबीआई अपना ये पॉलिसी डिसीजन इस वक्त अनाउंस करेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ मेजर करेगा जो स्पूक कर ले। लेकिन जो ग्राउंड वर्क जो मुझे दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं, और ये सब जाके इवेंचुअली स्पूक करने वाली मार्केट्स को, तो संभाल के चलिएगा। फिलहाल जो है आरबीआई मेरे ख्याल से शक्तिकांता दास जी बहुत संभाल के अपने पॉलिसी डालेंगे। ऐसा कोई मेजर स्टेप मुझे नहीं लग रहा लेंगे जिससे कोई मार्केट को कोई बड़ा सा धक्का नजर है। अब गुरुवार का दिन जब आ रहा है वो ऑप्शंस एक्सपिरेशन का भी दिन है। कच्चे तेल की कीमत विश्व बाजारों में बढ़ती जा रही है, और फ्राइडे को 86 से ऊपर चली गई सऊदी अरेबिया, और अभी रशिया भी बोल रहे हैं कि 1 बिलियन बैरल से दे वो अपने ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे सितंबर से लेके। तो ये कच्चे तेल की कीमत के लिए सही नहीं है। इससे आपसे पूरी इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने की संभावना है। फीडबैक इफेक्ट और फीडबैक लूप कहा जाता है उसे इकोनॉमिक्स में, उसकी वजह से आना होगा। और ये जो है जब तक आगे भी और अगर ये कट करते रहे तो और दिक्कत आने की संभावना है। तो कुल मिला जुला हफ्ता लग रहा है। एक कुछ अच्छा दिन, एक नहीं रहेगा, और एक बहुत वोलेटाइल दिन, और 2 दिन बहुत सामान्य रहने की संभावना है। और आप जरूर प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें, उसको डिटेल में हम पूरा रिलीज कर रहे हैं कौन से दिन क्या होना है। और याद रखिएगा प्रीमियम प्लस जो 8-10 दिन आपको एडवांस में देता है इन्फॉर्मेशन, प्रीमियम आपको 2 दिन एडवांस में देता है पूरा डिटेल टाइमिंग्स, और हम किस तरह से मार्केट का समझ रहे हैं उस हिसाब से। और आज ही ज्वाइन करें प्रीमियम प्लस। संपर्क करने का नंबर 9820861044। समाप्त करने से पहले हमेशा कहता हूं,
एक ये तो आप कर ही रहे इन्वेस्टमेंट, कोई दुखी है, कोई इंसान कोई हॉस्पिटल में है या कोई आपके रिश्तेदार है, जाके उसकी मदद करिए, सिर्फ फोन मत करिए, व्हाट्सएप मत करिए। आजकल एक पद्धति बनती जा रही है, व्हाट्सएप पे पूछना, व्हाट्सएप पे लिखना, उसका कोई मतलब नहीं रहा। जाइए, अगर आप किसके लिए आप देख रहे हैं कि कोई स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, करिए। ये आपके इन्वेस्टमेंट का जो आप जो कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि किसकी जो ब्लेसिंग्स और दुआएं निकलती हैं वो जाके आपको, ये तो मैं कह ही रहा हूं, ये तो मैं चलो आपको पूरा प्रेडिक्शन दे भी देता हूं पूरे हफ्ते का, 10 दिन का। इसके अलावा किसकी अच्छी गुड ब्लेसिंग्स, कोई बहुत कठिनाई में है, हाथ के ऊपर हाथ रखा के नहीं बैठिए, उठिए आज इसी वक्त। कोई तकलीफ में है, जाके उसकी हॉस्पिटल में मदद करिए। पैसे की जरूरत है, उसको कोई किसी डॉक्टर से उसको बात करना है, उसका सिर्फ जाके और टाइम पास के लिए जाके नहीं ना जाइए, उसका उल्टा उसका जाके चाय पी के उसको वेस्ट मत करिए उसका टाइम, उसके लिए कुछ करिए। उठिए और कुछ करिए लोगों के लिए। आप लोग भारतीय हैं, किसी के लिए अगर कोई तकलीफ में है, और फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई एम टेलिंग एवरीवन that please keep around 15-20% of your capital in emergency cash. You will need it. Nobody will come to you in difficult times. Okay? But आपको मेरा लेसन और एक अगर मैं छोटा सा आपको दे सकता हूं, मदद करिए। कोई हॉस्पिटल में है या किसका रिश्तेदार है, बैठे नहीं रहिए, फोन और व्हाट्सएप करके उसका टाइम मत खराब करिए। उठिए और जाके उसके लिए कुछ करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।